असम के सोनितपुर जिले के अंतर्गत ठेलामारा कालीबाड़ी के सांडिया श्री श्री दुर्गा पूजा के स्वर्ण जयंती के अवसर पर आज ठेलामारा सांस्कृतिक विकास समिति तथा कालीबाड़ी के सार्वजनिक मंच का शुभ उद्घाटन किया गया। विशिष्ट समाज सेवी रातुल कुमार नाथ की उपस्थिति में आज उक्त सार्वजनिक मंच का शुभ उद्घाटन डेकियाजुली के विशिष्ट समाज सेवी तथा प्रतिष्ठित व्यापारी महावीर छेटिया ने किया। आज के इस सार्वजनिक मंच के उद्घाटन समारोह में बरछला उप जिला कार्यालय के सहायक आयुक्त जाने आलम आज एक उत्साहपूर्ण वातावरण के बीच ठेलामारा सांस्कृतिक विकास समिति तथा कालीबाड़ी के सार्वजनिक मंच का शुभ उद्घाटन किया गया। आज के इस उद्घाटन समारोह में सभी के सहयोग के लिए ठेलामारा सांस्कृतिक विकास समिति के अध्यक्ष चंदन दास, कार्यकारी अध्यक्ष अरविंदो किशोर कर सहित पदाधिकारीगण ने कृतज्ञता प्रकट की। आज सप्तमी इतिपूर्वे ठेलामारा कालीबाड़ी सांस्कृतिक विकास समितिर जोआ पंचमीर दिनाखने आमार 50खन पताका उत्तोलन करी आमार शुभारम्भ करा हय सुवर्ण जयंती आरो आमी खकाकुल परिवेशर मजत आसो। या सकलोरे आपनालोকৰ अवगत जे অসমৰ सांस्कृतिक जगतर महानायक অসমীয়া অসমৰ সকলোৰে আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া মহাপ্ৰয়াণৰ হোৱাত আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা কৰি এটা শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতে আমি আগবাঢ়িব লগা হৈছে। গতিকে বাকি দেৱবাদ্য আৰু বাকি যি বৌদ্ধিক যি परम्परा पूजार क्षेत्र जिखिनि करिब लागे सेखिनिरे पूजा आरम्भ होइसे। जोवाकाली षष्ठी आज सप्तमीत भरि दिसे। गतिके আজি ইয়াত निर्धारित केबाटाও कार्यसूची आछिल। এই कार्यसूचीসমূহৰ বিষয়ত प्रथम कथा हल तेखेतসকলে स्थायी पूजागृह और पुराना जी आमार सांस्कृतिक विकास केन्द्रर जी कार्यालय तार उपरिও एटी राजहुৱা सभाघर तेखेतসকলে निर्माण কৰি উলিয়াইছে আৰু সেই राजहुৱা सभाघৰৰ লগতে এটা স্থায়ী মঞ্চ নিৰ্মাণ কৰিছে। গতিকে আমি ইতিমধ্যে মই আৰু মহাবীৰ চেতিয়া ডাঙৰীয়াই যাতে আমাৰ যি স্থায়ী সভাগৃহ আৰু স্থায়ী মঞ্চ ইতিমধ্যে আমি উন্মোচন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বাকি এই অনুষ্ঠানটো এটা পুৰণি অনুষ্ঠান। গতিকে ঠেলামাৰা বাবুজী ভৱনৰ পিছতে এই অনুষ্ঠানটো গঢ় লৈ উঠিছে। গতিকে 50 বছৰ ধৰি দিছে আৰু ইয়াৰ যিগৰাকী ভূমিৰ মালিক তেখেতকো আমি আজি মুহূৰ্তত আমি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰাণ জুবিন গাৰ্গদেৱ তেখেতে স্বৰ্গবাস হ'ল, তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ। হ'লেও আমাৰ নীতি নিয়মবিলাক চলি যাব তেনেকৈয়ে আজি ইয়াত স্বৰ্ণ জয়ন্তীত ভৰি দিলে। ইয়াৰ সমূহ উদ্যোক্তাসকললৈ আৰু প্ৰয়াতসকললৈ অজস্ৰ প্ৰণাম যাচিছোঁ। এই উৎসৱে জাতিক চহকী কৰিব আৰু সিহঁতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত মই কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত থকা আমাৰ